Hello everyone, myself Satish Kalra welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalra. And first of all, I want to clarify the motive of my channel. कि मेरे चैनल का मोटिव क्या है? The motive of this channel is bringing excellence to the students and to provide science and chemistry in simple language to banish the fear of these subjects from the students. कि स्टूडेंट्स को इन सब्जेक्ट से बहुत डर लगता है, तो स्टूडेंट्स के मन से इस डर को निकालने के लिए और स्टूडेंट्स में एक्सीलेंस लाने के लिए ही मैंने इस चैनल को शुरू किया है. सो दिस इज़ माय चैनल और इस चैनल पर मैं 9th-10th क्लासेस में साइंस के वीडियोस इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के और +1 + 2 में मैं केमिस्ट्री के वीडियोस अपलोड करता हूँ. सो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपने टॉपिक की तरफ करता हूँ. जो हमने कल टॉपिक किया था चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में, हमने कल किया था फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, एविडेंसेस विच रिप्रेजेंट द या ये कहेंगे एविडेंसेस विच रिप्रेजेंट द अकरेंस ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन. ठीक है, और उसके बाद हमने किया था द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन और एनी केमिकल चेंज, दैट इज द वर्ड इक्वेशन. एंड हमारे पास दूसरा क्या था, केमिकल इक्वेशन. आज हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होगा टुडे. वर नेक्स्ट टॉपिक इज, ये हमने कल किया था हमारे पास. और नेक्स्ट टॉपिक इज types of chemical reactions. Types of chemical reaction on the basis of total number of atoms of all the elements. ठीक है. So on this basis, the reactions are of two types. If we say the chemical equations, types of chemical equations, the chemical equations are of two types. One is the balanced chemical equation, and the second one is the unbalanced chemical equation. So what is balanced chemical equation? What is unbalanced chemical equation? Before doing these topics, balanced chemical equation and unbalanced chemical equation, we will firstly calculate. Firstly, we will identification of elements and number of atoms of different elements. प्रेजेंट इन ए गिवन सब्सटेंस. कि हमारे पास कोई गिवन सब्सटेंस है, उसमें हमें आइडेंटिफाई करना है विच एलिमेंट आर प्रेजेंट एंड व्हाट आर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. अब कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, देयर आर थिंग. हम एग्जांपल से लेंगे. जैसे सपोज कीजिए वी आर हैविंग Mg. दिस इज रिटन इन ए रिएक्शन. दिस इज सेकेंडली if H2SO4 is written in a reaction, or we say CaOH twice, this is written in equation. Then we will firstly identify which elements are present. Very simple method. We know about alphabets. One is capital letter, second small letter. If a capital letter is followed by another capital letter, then these two are the different elements. And if a capital letter is followed by a small letter, then these two letters will combinedly form one element. They combinedly represent only one element. So आप देखिएगा, M is capital, G is small. So Mg, this is a one element. H capital, S capital, O capital. So these three are the different elements. C capital, A small. So this is combined. Ca is only one element. Ca one element. Oxygen second element, hydrogen third element. So firstly, these are the elements. So in this case, element is Mg. Their elements are hydrogen, sulfur and oxygen. And in this case, elements are
calcium, oxygen and hydrogen. Now the number of atoms. Suppose हमें नंबर ऑफ एटम्स कैसे बताना है, बड़ा सिंपल केस. सपोज H इज द सिंबल ऑफ एनी एलिमेंट. मान लो H क्या है, दिस इज एनी एलिमेंट. हम ऑटोमेटिकली क्या है, बॉक्स एज्यूम करेंगे, बनाना नहीं है, बॉक्स एज्यूम करेंगे. अब इस बॉक्स में दिस इज द राइट हैंड साइड, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड. वी विल से व्हाट नंबर इज रिटन ऑन द सबस्क्रिप्ट इन राइट हैंड साइड. सो राइट हैंड साइड ये है हमारे पास, ये वाली साइड राइट हैंड साइड है. सो यहाँ जो होता है दिस इज कॉल्ड सुपरस्क्रिप्ट, और यहाँ जो होता है उसे क्या होता है, सबस्क्रिप्ट. तो हमें देखना है सबस्क्रिप्ट वाली पोजीशन पे क्या लिखा है. द नंबर रिटन एट सबस्क्रिप्ट इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट. सो सपोज करो यहाँ 4 लिखा है, सो इट मीन्स 4 इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एच एलिमेंट. यू विल से दैट 4 एटम्स ऑफ एच एलिमेंट. सो अब देखेंगे यहाँ पर mg है, यहाँ पर राइट हैंड साइड सबस्क्रिप्ट पे कुछ लिखा है. नो नंबर इज रिटन, वी विल राइट 1. जहाँ यदि कोई नंबर ना हो तो हम ऑटोमेटिकली 1 लिखेंगे. इट मीन्स इट विल रिप्रेजेंट द एटम. सो इट मीन्स 1 एटम ऑफ mg एलिमेंट, यानी कि 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम एलिमेंट. अब सेम वैसे यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन के नीचे क्या है 2. सो इट मीन्स 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. सल्फर के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 एटम ऑफ सल्फर एंड 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. अब यहाँ पर है तो यहाँ हम ब्रैकेट ओपन करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल. अब Ca ब्रैकेट से बाहर है, अब OH ब्रैकेट में था, तो यहाँ हम ये देखना है ब्रैकेट के बाहर जो है उससे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एटम्स वाली पोजीशन वाले नंबर को. विल मल्टीप्लाई द नंबर प्रेजेंट एट पोजीशन ऑफ एटम्स विद द नंबर रिटन आउटसाइड द ब्रैकेट. सो आउटसाइड द ब्रैकेट इज 2 एंड ऑक्सीजन के नीचे एटम वाली पोजीशन में क्या है 1, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. 2 1 क्या होगा 2, तो O2 आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन हो जाएगी. सेम वे से H1 2 2, 1 2 2, सो Ca1 O2H2. सो अब हम देखेंगे व्हाट आर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कैल्शियम एलिमेंट, दैट इज 1. व्हाट आर द नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट, दिस इज 2. व्हाट आर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट, दिस इज 2. सो दीज आर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. Clear? Is everything clear? Just reply, is everything clear? Now we'll find out the total number of atoms of all the different elements present in any given substance. Now we will find out the total number of atoms of all the elements present in any given substance. Suppose I am saying CaHCO3 twice. This is first example. और यहाँ एक सेकेंड ले रहे हैं हम Al2SO4 thrice, और यहाँ सामने 2 है. So first of all we will identify elements. इन केस ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट ओपन कर लेंगे. अब 1 1 1 ये ब्रैकेट ओपन करें, Ca1 होगा, H1 2 2 होगा, C1 2 2 होगा, ऑक्सीजन 3 2 6 होगा. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमने कर दिया. अब हमें ये देखना है, वी नो the number written on the right hand side subscript it represent the number of atoms, and the number written in front of the formula of any compound. अब ये पूरा कंपाउंड का फार्मूला था. अब हमें देखना है in front of this which is written. फ्रंट मीन यहाँ पर देखना है. If any number is written then it okay, if no number is written then we will write 1. So this number which is written in front of any formula, this number represent molecule. So this number represent molecule. So यहाँ पर क्या है 2 molecules हैं.
Clear? So if you have to find out the total number of atoms of all elements, पहले हमने क्या फाइंड आउट किया है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट. अब मैं कह रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स. सपोज करो वी आर फाइंडिंग टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ कैल्शियम, सेम वैसे टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. सेम वैसे यहाँ पर एलिमेंट्स कौन से हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम, total number of atoms of sulfur, total number of atoms of oxygen. Then how will find out the total number of atoms? If you have to find out the total number of atoms, क्या करना है हमें, the number written on the position of molecule, molecule वाली जहाँ पे जो नंबर लिखा है, it is multiplied by the number written on the atoms position. यानी कि एटम्स वाली पोजीशन पे जो नंबर है उसे हम क्या है मॉलिक्यूल वाली पोजीशन वाली नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे. दीज आर द टोटल नंबर ऑफ एटम्स. अब देखिए फर्स्ट एलिमेंट इज कैल्शियम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे क्या है 1 और एटम वाले पे क्या है 1, तो यहाँ 1 लिखते हैं किसाने, तो 1 into 1 दैट इज 1. टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, अब मॉलिक्यूल वाली पोजीशन पे क्या है 1, तो ध्यान रखिएगा दिस 1 इज फॉर ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल या प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड. सो दिस 1 इज फॉर कैल्शियम, दिस 1 इज फॉर हाइड्रोजन, दिस 1 इज फॉर कार्बन, दिस 1 इज फॉर ऑक्सीजन, दिस इज 1. सो ये सेम रहेगा. मल्टीप्लाई करने के लिए नीचे एटम वाले पोजीशन वाले अक्षर डिफरेंट होंगे. सो हाइड्रोजन के केस में क्या है, सामने क्या है 1, बॉटम में क्या है 2, 1 2 जा 2. सेम वे से कार्बन के केस में 1 2 जा 2. ऑक्सीजन के केस में 1, ऑक्सीजन के लिए क्या है 6, 1 6 जा 6. सो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कैल्शियम, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन. अब नाउ वी से टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ एल्यूमिनियम. अब सामने क्या है 2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into एल्यूमिनियम के नीचे 2 2 2 4. सेम वैसे 2 3 जा 6 एंड 2 12 जा 24. सो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स. आई थिंक दिस इज ऑल्सो क्लियर. सो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. नाउ अब हम आएंगे व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, जिसके बारे में आज हमने बताना है आपको. नो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन? द केमिकल इक्वेशन in which the total number of atoms of all the different elements on both sides of the arrow are equal. If total number of atoms of all the different elements on both sides of the arrow are equal, then that equation is known as the balanced chemical equation. Then that chemical equation is called balanced chemical equation. Then that chemical equation is called balanced chemical equation. So अब हम इसे चेक करेंगे. The given chemical equation is balanced or not? बहुत सिंपल. और सेम वैसे पहले अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोले, दिस इज आल्सो कॉल्ड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन. सो व्हाट आर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या व्हाट आर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन? डेफिनेशन आपने ऊपर पढ़ी है. बैलेंस में क्या होगा इक्वल एंड अनबैलेंस में क्या होगा नॉट इक्वल. सो द केमिकल इक्वेशन इन विच टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो आर नॉट इक्वल. यहाँ क्या रहेगा नॉट इक्वल. Then that chemical equation is called unbalanced chemical equation. This is also called skeletal chemical equation. अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बहुत सिंपल. फॉर एग्जाम्पल, if we are having a reaction 2H2 plus O2 that gives 2H2, we will check the total number of atoms of all the elements on both sides of the arrow. First of all, we will check which elements are present on left hand side of an arrow. So ये arrow है, इसके लेफ्ट साइड में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 इज हाइड्रोजन, सेकंड इज ऑक्सीजन. नाउ विल फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट. सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन ऑन लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? 2 2 4.
सेम वे से अब हमें राइट हैंड साइड देखेंगे. राइट हैंड साइड ये रहा हाइड्रोजन. टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट ऑन राइट हैंड साइड 2 2s are 4. It means on left hand side total number of atoms of hydrogen are 4. Right hand side they are also 4. Equal. Oxygen total number of atoms of oxygen 1 2s are 2. Left hand side total atoms 2 and right hand side 2 1s are 2. So total number of atoms of oxygen elements are also equal. So total number of atoms of hydrogen and oxygen both are equal on left hand side as well as right hand side. So this chemical equation, this is called the balanced chemical equation. The next is the unbalanced chemical equation. हमें क्या देखना है? Total number of atoms of all the elements must be equal for balanced chemical equation. Now, second example, N2 plus S2 that gives 2NH3. Suppose we are having this equation. We will check total number of atoms of nitrogen element on left hand side and right hand side. On left hand side we will see 1 2s are 2 and right hand side 2 1s are 2. It means total number of atoms of nitrogen element are equal. Now total number of atoms of hydrogen element. Left hand side 1 2s are 2 and on right side 2 3s are 6. So we see that total number of atoms of nitrogen element are equal, but total number of atoms of hydrogen element are not equal on both sides of the arrow. So this equation, this is called unbalanced. Means हमारे पास total number of atoms of all the elements must be equal. If any is not equal, यदि कोई भी equal नहीं होगा, single element के atom भी equal नहीं होंगे, तो that equation is known as the unbalanced chemical equation. So इस तरह से हम identify करेंगे. We will identify whether a given chemical equation is balanced or unbalanced. And this is all about my today's class. Identification of elements, identification of finding of the number of atoms of all the elements, finding of the total number of atoms of all the elements, what are the different type of chemical equation, balanced chemical equation and unbalanced chemical equation, and identification of balanced chemical equation and unbalanced chemical equation. This is all about my today's topic, and hope you learnt a lot from my class. Our next topic for tomorrow is balancing of any chemical equation. Keep attending my live classes. Thank you so much, and thanks for watching my videos as well as channel as well as attending the classes.